أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fellow, our topic is how to write a problem statement. तो आज हमारा टॉपिक है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी का कैसे लिखा जाता है. What would be the criteria? What would be the style? What would be the wordings? So this lecture is all about that how you will write a research problem statement. So let's start it. So if we define the statement of the problem, so it would sound like a problem statement is a brief explanation of the issues or topic which need to be solved by the researcher. Or a research problem statement is a brief sketch of a problem faced by a researcher. And the problem statement is essentially a clear description of an issue that faces a group of individuals. So if you look into the definition, so it's clearly stated that it's a brief explanation. It's a brief sketch of the research problem, what the researcher want to do, what is want to achieve, and it's a clear description of the problem in hand. So if you look into the statement of the problem definition, so it's clearly stated that what is about, all about that. So a problem statement is a clear, जैसे मैंने पहले बताया, it's a clear description of the issue. It includes a vision, issue statement, and method used to solve the problem. What would be the vision of the researcher? What would be the method used by the researcher to solve the problem? So it should also include. A problem statement expresses the word that will be used to keep the effort focused, and it should represent a solvable problem. Statement of the problem may be written in one or two sentences that describe the question, that what is the actual study problem which need to be solved. Statement of the problem को एक या दो सेंटेंस में, बहुत से आपने देखे होंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि वो 2-3 सफ़ों का होता है, इसमें तमाम चीजें होती नहीं, ये एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आप इसको लिखें, इसको ब्रीफ करके लिखें, अपना मुद्दा बयान करें, what is the issue, how you solve that, what method you will use, and where the problem is existing, and why you want to focus this problem. So these all would be coming following के क्या क्या आपने इसमें देना है. So a good problem statement may always answer the following. एक अच्छा जो स्टेटमेंट होता है प्रॉब्लम का, वो हमेशा ये जो नीचे क्वेश्चन है जब पढ़ के आऊंगा, उनके जवाब देना जरूरी है कि ये क्या क्या आप करें. कि पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या. दिस शुड एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्चर वांट टू सॉल्व पर्टिकुलर इशू और व्हाई इट इज नीडेड टू बी सॉल्व. क्यों जरूरी है ये इशू, क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, रिसर्चर को ये एक्सप्लेन करना जरूरी है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में, कि अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कि इसके बाद व्हाई इट इज नीडेड टू बी सॉल्व, क्यों ये जरूरी है कि इसको सॉल्व किया जाए. हु इज द प्रॉब्लम और हु इज द पॉपुलेशन, क्लाइंट, कस्टमर. देखिए प्रॉब्लम किसी को तो हो सकता है, या पॉपुलेशन होगी, या क्लाइंट होगा, या कस्टमर होगा, या लार्जर कम्युनिटी होगी, स्कूल सेटिंग होगी, कॉलेज होगा, तो इंडिविजुअल होंगे, ग्रुप होगा, किसको प्रॉब्लम है. सो दिस शुड आल्सो बी एक्सप्लेन दैट हु हैज द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व एंड हु विल डिसाइड दैट द प्रॉब्लम हैज सॉल्व्ड. कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी. इससे पहले लेक्चर में अगर आपने सुना होगा कि जब आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्वेश्चन का जब आपको आंसर मिल जाता है, नो यू विल डिसाइड, फिर ये डिसीजन मुमकिन हो सकता है कि नाउ योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड एंड द आंसर हैज बीन clearly mentioned that now you have completed your task. What would be the criteria for solving the problem? Method क्या होगा, criteria क्या होगा. What is the scope and limitation of the problem in terms of time, money, resources, technology, etc. that can be used to solve the problem.
Does the population client want a white research paper, a web tool, a new features for the product, or brainstorming on the topic? अभी ये जो चीजें हैं हमारे यहाँ तो नहीं होती यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो है ना मुख्तलिफ शोबों के, तो उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे इस चीज पे रिसर्च करनी है, मुझे वेब टूल डेवलप करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए ये फीचर डेवलप करने हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपने अगर देखा होगा कि जब 2000 के बाद एक्सएलआई गाड़ियां आई, तो एक्सएलआई बिकने लगी, लेकिन एक प्रॉब्लम बाद में आई क्योंकि वो फीडबैक लेते हैं क्या कहते हैं कंज्यूमर से। तो कंपनी जब वो फीडबैक लिया तो एक कंप्लेंट ये आई कि उसके ब्रेक जो हैं वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और उसकी सेल पे असरअंदाज होते हैं। तो इस ये एक प्रॉब्लम थी कि ब्रेक को अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो उन्होंने रिसर्च की कि इसके फीचर्स को कैसे हम डेवलप कर सकें ताकि ब्रेक सही लगे। तो आपने अगर देखा तो जीएलआई और 2005 के बाद जीएलआई जुलाई 2005 के बाद उसमें एबीएस ब्रेक लगा, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम जब उसने लगा लिया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह आईएसआई एक पेंट कंपनी थी, तो जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया तो कुछ अर्सों के बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो कंप्लेंट ये आ रही थी कि इसमें से काफी देर तक बदबू आती है। तो वो कंपनी गई क्लाइंट्स के पास, रिसर्चर्स के पास, प्रोफेसर के पास, और उन्होंने उसको सोल्यूशन के लिए कहा कि हमें इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स को सॉल्व कर दें। तो प्रोफेसर हमेशा ये करते हैं कि अपने जो डॉक्टरेट के स्टूडेंट होते हैं, एमफिल के स्टूडेंट होते हैं, उसको टॉपिक दे देते हैं और वो उस पर रिसर्च करके और कुछ पैसे लेते हैं उनसे, जिसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो वो उस तरह उन्होंने वो जो फीचर्स थे, जो उसकी बदबू थी, उसको ठीक कर दिया और फिर इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये वो चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई है कि क्लाइंट क्या चाहता है, वो वाइट पेपर चाहता है, रिसर्च पेपर चाहता है, वेब टूल चाहता है, न्यू फीचर फॉर द प्रोडक्ट चाहती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द टॉपिक, आप उस पर सोचे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ये प्रॉब्लम है, इस पे आप हमें कुछ बताएं कि क्या हो सकता है, इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले, दिमाग खटकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड टॉक। मैं हमेशा 5 W और 1 H की बात करता हूँ कि जब भी आप रिसर्च में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं या आप सर्च करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है, हु, बट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो ये 5 Ws एंड 1 H जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके दूं तो ये कि हु डज द प्रॉब्लम अफेक्ट, स्पेसिफिक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर एक्सेप्ट, ये हु हैज द प्रॉब्लम, किसको ये प्रॉब्लम है, क्या वो स्पेसिफिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, या कस्टमर्स हैं, या लार्जर कम्युनिटी है, स्मॉलर कम्युनिटी है, स्कूल सिस्टम है, क्या क्या है, कौन है जिसको ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉब्लम, इसकी बाउंड्रीज क्या है, कितनी दूर तक ये फैला हुआ है प्रॉब्लम, तो वो बाउंड्रीज को कंफाइन करना वो भी जरूरी है कि आप इसको डिफाइन करें कि ये इसके बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक है, मुख्तलिफ स्कूलों में है, कॉलेजों में है, फीमेल में है, मेल में है, इंडिविजुअल्स है, ग्रुप है, टीम है, क्या है, किसके मतलब है। व्हेन डज द इश्यूज अकर, कब से ये, एंड व्हेन डज इट नीड टू बी फिक्स, और कब ये जरूरी जाना गया कि अब इसको फिक्स कर दिया जाए। और वेयर का मतलब वेयर द इश्यूज अकरिंग, कहाँ पे है ये, ओनली इन सर्टन लोकेशन, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, किसी लोकेशन पे है, किसी प्रोसेस में है, या प्रोडक्ट में है, किसी और चीज में है, तो उसको भी डिटरमिन करना जरूरी है। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट फिक्स, क्यों जरूरी है कि आप इस प्रॉब्लम का हम सॉल्व करें। व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन पॉपुलेशन, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या होगा ऑन द पॉपुलेशन, जो जिसको ये प्रॉब्लम है उस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एंड हाउ मीन्स के हाउ द प्रॉब्लम विल बी एड्रेस, इट मीन्स दैट व्हाट मेथड वुड बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सा मेथड इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए, कौन सा मेथड यूज किया जाए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नाउ हाउ टू प्रिपेयर अ थीसिस स्टेटमेंट, ये मैंने एक वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, स्केच दिया हुआ है कि कैसे
अब अगर उसके टॉप पे आप देखें तो पहले पहले इसमें हमने दिया कि योर टॉपिक। अब टॉपिक आपका क्या है, व्हाट योर थीसिस विल डील विद, क्या टॉपिक होगा। योर क्लेम, आप क्या क्लेम करते हैं कि मेरे थीसिस में क्या क्या चीजें हैं। एंड जब आप क्लेम करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप ये कहेंगे कि रीजन आर पॉइंट्स दैट सपोर्ट योर, कम से कम 3 रीजन, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए आप 3 रीजन भी दें कि वो क्या है, तो फिर आपका जो इसी स्टेटमेंट है, तो इस जो फिगर देख रहे हैं, जो आप ये स्केच देख रहे हैं, इसके मुताबिक अगर आप तैयार करेंगे तो एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट आपका तैयार हो। नाउ टर्निंग इनटू द टॉपिक के क्या आपका टॉपिक होगा। जैसे मैंने कहा कि आपका टॉपिक क्या, फॉर एग्जांपल हम करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो ये मेरा टॉपिक है। मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ, क्लेम ये कर रहा हूँ कि एवरीवन शुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हर किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। मेरा क्लेम है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो हर किसी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब जो 3 रीजन मैंने आपको बताया, जो आपके पॉइंट्स जो हैं या क्लेम जो हैं, उनको 3 रीजन में कि क्यों जरूरी है वो, तो रीजन 1, स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल फिजिक, नंबर 2, स्पोर्ट्स डेवलप रिलेशनशिप विद अदर, एंड थर्ड, स्पोर्ट्स गिव अ चांस ऑफ रिक्रिएशन। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं ये क्लेम करता हूँ कि एवरीवन शुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और मेरा जो टॉपिक था वो बेनिफिट। अच्छा, अब इन्हीं क्लेम्स को और इन्हीं रीजंस को अगर हम किसी स्टेटमेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ स्टेटमेंट राइटिंग विथ पॉइंट्स, रीजन, पॉइंट्स। जो रीजन थे मेरे, जो 3 क्लेम्स थे, जो 3 रीजन थे, उनको एट द एंड ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो कैसे होगा। अगर इन्हीं रीजन को, पॉइंट्स को बिगिनिंग ऑफ थीसिस में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एंड पॉइंट रीजन लिस्ट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर द थीसिस स्टेटमेंट, तो वो कैसे होगा। यानी 3 तरीके हैं, या तो आपने इसको एंड में लिखना है जो आपके 3 रीजन हैं, और या उसको बिगिनिंग में लिखना होगा, या उसको कहीं से दरमियान में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, अगर हम इसको लिस्ट करें, दीज रीजन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, इट वुड साउंड लाइक दिस: everyone should take part in sports activities because sports develop individual physique, it develop relationship with other, and it gives a chance of recreation. See, अगर हम स्टेटमेंट के प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के एंड पे अपने रीजन को लिखेंगे तो वो इस तरह। अगर हम इसको लिखेंगे बिगिनिंग में, स्टार्ट में, तो कैसे लिखेंगे, इट विल साउंड लाइक development of individual physiques, relationship with others, and a chance of recreation are the reason that everyone should take part in sports activity. तो ये जब जैसे आप स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो बिगिनिंग में अगर आप अपने रीजन लिख सकते हैं तो वो इस तरह लिखेंगे। अगर इसको कहीं पे दरमियान में आपने लिखना होता है सेपरेट सेंटेंस में, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो है everyone should take part in sports activities, it develops individual physique, relationship with others, and a chance of recreation. So इन तमाम पॉइंट्स को, वो तमाम जो ऊपर मैंने जो चीजें बता दी थी, 5W1H, और ये तो तमाम को अगर हमने लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल ये है कि for a few decades life becomes so fast and demanding that each of us is not paying due care to our physique. It leads to many mental, social, and physical problems. Lack of physical activity is one of the basic components that contribute to facing the above problem. Nowadays, we are facing so many problems related to our physical health. If we do not give attention to this problem and do not come up with certain solutions, then most probably it will lead our nation towards disaster. And it will adversely affect our nation. To overcome and resolve the problem, every one of us should take part in some sort of sports physical activity, because these activities not only develop our physique but also enable the person to develop relationships with others, and at the same time it gives the chance of recreation too. For this purpose, the researcher developed a test to measure the physical state of the people. In the light of that test, measure would be suggested to overcome the related physical
प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि वो तमाम चीजें जो मैंने ऊपर बयान कर ली कि किसको है, कहाँ पे है, क्यों है, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे, आपके क्लेम्स क्या हैं, और उस क्लेम्स के रीजन आप 3 रीजन दें, वो तमाम इसमें शामिल है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो आप ये देखें कि ये जो चीजें थी कि वी हैव पॉइंट्स, रीजन एंड हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो वो चीजें कहाँ पे, हु हैज द प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले the population of the study or who has the problem, for example we Pakistani, Pakistan में ये problem, what is the problem या boundaries of the study, physical problem, when the problem arises, कब से है, nowadays, अब आजकल ये हो रहा है, ठीक है जी, और where the problem exists, पाकिस्तान में exist कर रहा है, why it is important to solve, the nation will lead to a disaster, and at last how how the problem will be addressed, development of tests to measure physical condition of people। तो इस तरीके से हम इसको एड्रेस करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम वो चीजें थी कि आपने देखा कि किस तरह स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखी जाती है विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया।